शाळेच्या या नवीन व्याख्यानमालेच्या मालिकेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं आम्ही कुतूल शाळेचे सहअध्यायी स्वागत करत आहोत. आज आपण प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर आणि इरफान हबीब यांच्या गौरवार्थ जी व्याख्यान मालिका जी सुरू केली आहे त्यांच्या कामाच्या प्रती आपल्याला एक आदर म्हणून, तर त्यासाठी आपण कुतूल शाळेची ही व्याख्यानमाला सुरू केलेली त्यांच्या गौरवार्थ. मी आपल्यासोबत कुतूल शाळेविषयी आपल्या सगळ्यांना माहिती सांगण्यासाठी आमचे सहअध्यायी मित्र किशोर मोरे यांना निमंत्रित करतो. किशोर, तू आपल्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सना कुतूल शाळेच्या संदर्भात सांग. त्यानंतर या व्याख्यानमालेच्या संदर्भात 2 शब्द मी बोलणार आहे आणि नंतर मग आजच्या आपल्या कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक डॉक्टर राधिका सेशन मॅम यांची ओळख आमचे मित्र आणि कुतूल शाळेचे सहअध्यायी डॉक्टर मुफीद मुजावर करून देतील आणि त्यानंतर मग मॅमच्या व्याख्यानाची सुरुवात होईल. मॅम त्यांच्या वेळेत मांडणी करतील आणि त्याच्यानंतर मग आपण काही प्रश्न उत्तर घेणार आहोत. असं आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचं स्वरूप असेल. किशोर. नमस्कार. कुतूल शाळेच्या वतीने सहभागी सगळ्या सहअध्यायींचं मी स्वागत करतो. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे कुतूल शाळा कशी झाली, काय झाली आणि त्याचे आतापर्यंतचे कुठकुठले कार्यक्रम होते, परंतु प्रत्येक नवीन कार्यक्रमामध्ये काही नवीन सहअध्यायी जोडले जातात. त्यामुळे आम्ही प्रत्येक वेळेस कुतूल शाळेची जी पार्श्वभूमी ती सांगतो. कुतूल शाळा हा जो प्लॅटफॉर्म आहे की जो इतिहासाचा सामूहिक अभ्यास आणि लोक शिक्षण केंद्र असं त्याचं टायटल आम्ही ठरवलेलं आहे, की ज्यातून आपल्या जुन्या ज्या प्राचीन भारतीय वादविवादाच्या विचार विमर्शाच्या परंपरा त्या पुनर्जागृत करावं आणि इतिहासाचा खऱ्या अर्थाने अकादमिक, वैज्ञानिक आणि तार्किक पद्धतीने प्रसार व्हावा यासाठी कुतूल शाळा गेल्या 1-1.5 वर्षापासून अशा विविध प्रबोधनात्मक की ज्याच्यातून इतिहासाची जाणीव जागृती तयार होईल असे कार्यक्रम राबवत आलेली आहे आणि इथून पुढेही ती राबवत राहील. कुतूल शाळेचा जो कन्सेप्ट नोट आहे की ज्याला थीम पेपर आम्ही प्रत्येक वेळेस टाकतो, त्यामध्ये जुन्या प्राचीन परंपरा मग त्या जागतिक इतिहासापासून भारतीय इतिहासापर्यंतच्या जे राफाएलचे स्कूल ऑफ अथेन्सचं चित्र, ते अकबराचा इबादत खाना आणि खऱ्या अर्थाने जी कौतूहल शाळा आहे ती बौद्ध कालखंडापासून आम्ही त्याची प्रेरणा घेतली आणि बौद्ध कालखंडामध्ये प्रत्येक ठिकाणी अशा पद्धतीच्या कुतूहल शाळा, कौतूहल शाळा ज्याला रोमिला थापर कौतूहल शाळा म्हणतात, त्या सगळ्या होत्या. अकबराच्या इबादत खाना बौद्ध परंपरेची कुतूहल शाळा, रफाएलचे स्कूल ऑफ अथेन्स आणि त्याचबरोबर 12व्या शतकातला जो क्रांतिकारी एक वेगळा तत्वज्ञान होता बसवेश्वरांचं, त्याचा अनुभव मंडप, या सगळ्या ज्या परंपरा आहेत त्याच्यातून जुन्या वादविवादाच्या तार्किक सहयोग ज्ञान निर्मितीच्या प्रक्रिया दिसतात की त्यापासून आम्ही प्रेरणा घेतोय आणि ह्या सगळ्या ज्या प्रेरणा आहेत विचार विमर्शाच्या त्या पुनर्जागृत व्हावा अशी आमची इच्छा आहे आणि त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने अकादमिक इतिहास हा लोकांपर्यंत पोहोचवावा आणि आतापर्यंत जी एक इतिहासाची चुकीची विकृत काही पद्धतीची मांडणी होते त्याला एक वेगळ्या अकादमिक स्तरावर लोकसहभागातून उत्तर देण्यात यावं किंवा अशा पद्धतीने त्याचा प्रसार व्हावा असा एक उद्देश कुतूहल शाळेचा आहे. त्यामुळे आतापर्यंत चुकीची जाणीव किंवा फॉल्स कॉन्शियसनेस जो तयार झाला त्याच्यातून मोठ्या प्रमाणात नुकसान सगळ्याच मानवजातीचं होतं आणि ते थांबवण्यासाठी किंवा त्याच्यातून खऱ्या अर्थाने खरी इतिहासाची जाणीव जागृती व्हावी आणि त्याचा प्रबोधन आणि प्रसार व्हावा, त्यातून कुतूहल शाळेची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. आणि त्याचबरोबर हे जे व्याख्यानमाला आहे या वर्षीची 2022ची, त्याचं एक थीम आहे. ती थीम देवकुमार आपल्याला सांगतील. ओव्हर टू यू देवकुमार. थँक्यू किशोर. आता जस्ट आमचे मित्र किशोर मोरे यांनी आपल्या सगळ्यांना कुतूल शाळेच्या संदर्भात माहिती दिलेली आहे आणि कुतूल शाळेचा हेतू, उद्देश आणि जीवन ध्येय काय आहे याविषयी सांगितलं. मी आता इथे आपल्या समोर ही आम्ही जी आता व्याख्यानाची जी मालिका सुरू केलेली आहे त्याची थोडी ओळख करून देण्यासाठी आहे. कुतूल शाळेच्या वतीने प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर आणि इरफान हबीब या दोन्हींच्या 90 निमित्ताने त्यांच्या गौरवार्थ वर्षभर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे, व्याख्यानांचे आणि कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. रोमिला थापर आणि इरफान हबीब यांनी प्रदीर्घ काळ नुसते इतिहास संशोधन, इतिहास लेखनाचेच काम केले नाही, तर सातत्याने नागरिक आणि इतिहासकार म्हणून लोकशिक्षणाचेही काम केले आहे. देशभरातील वेगवेगळे प्रश्न आणि वेगवेगळ्या समस्यांवर
रोमिला थापर व इरफान हबीब नेहमीच लोकांच्या बाजूने भूमिका घेत असतात. तसेच भारतीय समाजातील लोकशाही व्यवहार आणि ज्ञान व्यवहार निर्मळ आणि समृद्ध आणि दृढ व्हावा म्हणून दोघांचेही अत्यंत महत्वाचे योगदान आहे. जगभरात भारतीय इतिहासकारांमध्ये रोमिला थापर व इरफान हबीब हे अग्रक्रमाचे भारतीय इतिहासकार म्हणून ओळखले जातात. अनुक्रमे आरंभिककालीन भारत आणि मध्ययुगीन भारताच्या अभ्यासाच्या कक्षा आणि समज रुंदावण्यामध्ये दोन्ही इतिहासकारांनी अत्यंत महत्वाचे योगदान दिलेले दिसून येते. रोमिला थापरांनी एका चर्चेमध्ये कुतूल शाळेविषयी मांडणी केली होती. त्यावरूनच आम्ही कुतूल शाळेची सुरुवात केलेली आहे. कुतूल शाळेच्या सुरुवातीची जी म्हणजे प्रेरणा आहे त्या रोमिला थापरांची मांडणी ही आमच्यासाठी राहिलेली आहे. इरफान हबीब सातत्याने इतिहास शिक्षण आणि इतिहास साक्षरता घडवून आणण्यासाठी आपल्या लिखाणातून आणि आपल्या संवादांमधून प्रयत्न करीत असतात. विशेषतः त्यांची पीपल हिस्ट्री पुस्तकाची मालिका ही अत्यंत महत्वाची राहिलेली आहे इतिहास शिक्षण आणि इतिहास साक्षरता करण्यासाठी. त्यामुळेच जनसाक्षरतेची कल्पना आम्ही इरफान हबीब यांच्याकडून घेतलेली आहे. समाजात मतभेद, संवाद, चर्चा, मंथन आणि वादविवाद असल्याशिवाय लोकशाही व्यवहार व ज्ञान व्यवहार समृद्ध होत नाही. दोन्ही इतिहासकार म्हणजे रोमिला थापर आणि इरफान हबीब सातत्याने आयुष्यभर लोकशाही व्यवहार आणि ज्ञान व्यवहार व्हावा यासाठी झटत आलेले आहे. त्यामुळेच आम्ही कुतूल शाळेचे सहअध्यायी त्यांचा गौरव करू इच्छित आहोत. त्यासाठीच आम्ही या वर्षभरामध्ये एक दीर्घकालीन एक योजना आखलेली आहे. म्हणजे या पूर्ण 2022 मध्ये आम्ही पूर्ण वर्षभर रोमिला थापर आणि इरफान हबीब यांच्या कार्याचा गौरव करता यावा म्हणून वर्षभर आम्ही वेगवेगळ्या व्याख्यानांची मालिका करणार आहोत. तसेच एक अल्पकालीन कृती कार्यक्रम सुद्धा आम्ही आखलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा वर्षभरासाठी स्त्री इतिहासकारांच्या योगदानांची आम्ही चर्चा करणार आहोत आणि वर्षभरासाठी वेगवेगळ्या स्त्री इतिहासकारांना त्यांचे काम आपल्यासोबत शेअर करण्यासाठी आपल्या समोर मांडण्यासाठी आम्ही निमंत्रित करणार आहोत. तसेच वेगवेगळ्या इतिहासामधले जे वादविवाद आहेत किंवा वेगवेगळ्या ज्या दृष्टिकोन आहेत किंवा वेगवेगळ्या ज्या घडामोडी घडत आहेत त्या सगळ्यांवर सुद्धा आपण तुमच्यासोबत आणि एकूणच सर्व लोकांसोबत चर्चा करणार आहोत. ही आमची अशी या वर्षभरासाठीची एक नियोजन मालिका आहे ज्याच्यातून रोमिला थापर आणि इरफान हबीब यांच्या कार्याचा आम्ही गौरव करणार आहोत. यानंतर आपले मित्र मुफीद मुजावर आजच्या व्याख्याता डॉक्टर राधिका शेषन मॅम यांची ओळख करून देतील. मुफीद. Mufid, you're muted. हा, सर्वांना नमस्कार. आज दिनांक 6 फेब्रुवारी 2022 रोजी कुतूल शाळा आयोजित प्रोफेसर रोमिला थापर आणि प्रोफेसर इरफान हबीब गौरवार्थ विशेष व्याख्यानमालेमधील पहिल्या व्याख्यानासाठी प्राध्यापक डॉक्टर राधिका शेषन या व्याख्याता म्हणून आपल्याला लाभल्या आहेत. प्राध्यापक डॉक्टर राधिका शेषन मॅडम या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे येथील इतिहास विभागातून प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख म्हणून निवृत्त झाले आहेत. प्रोफेसर राधिका शेषन यांना अनेक वर्षाचा अध्यापनाचा संशोधनाचा अनुभव आहे. हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर रिजनल स्टडीज येथे देखील त्यांनी काही काळ अध्यापन केले आहे. इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीमध्ये देखील त्यांनी काम केले आहे. सध्या त्या सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स
पुणे येथे व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. प्रोफेसर शेषन यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विद्यार्थ्यांनी एमफिल आणि PhD चे संशोधन पूर्ण केले आहे. मी स्वतः मॅडमचा MA चा विद्यार्थी असून माझ्या एमफिलच्या संशोधनासाठी मॅडम माझ्या मार्गदर्शक होत्या. हे या निमित्ताने मला खूप अभिमानानं नमूद करावं वाटतं. अध्यापनातील दीर्घ अनुभवासोबतच संशोधन आणि लेखनाचे प्रदीर्घ कार्य प्राध्यापक राधिका शेषन यांनी केले आहे. सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीज JNU येथून मध्ययुगीन इतिहास विभागातून त्यांनी MA आणि MPhil ची पदवी प्राप्त केली आणि त्यानंतर पुणे विद्यापीठातून PhD चे संशोधन पूर्ण केले. कोरमंडळ किनाऱ्यावरील व्यापार आणि राजकारण हा त्यांच्या PhD च्या संशोधनाचा विषय होता. सदर PhD चे संशोधन हे पुस्तक स्वरूपात प्रायमस या प्रतिष्ठित प्रकाशनाद्वारे प्रकाशित झाले आहे. प्रोफेसर राधिका शेषन यांचे अनेक ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत. ट्रेड अँड पॉलिटिक्स ऑन कोरमंडल कोस्ट 17th अँड अर्ली 18th सेंचुरी हे पुस्तक 2012 मध्ये आलं. आयडियाज अँड इन्स्टिट्यूशन इन मेडिवल इंडिया 8th to 18th सेंचुरी हे ओरिएंटल ब्लॅकसन प्रकाशित केलेलं पुस्तक 2013 मध्ये आलं. त्याचबरोबर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ईस्ट इन द वेस्टर्न ट्रॅव्हल नरेटिव्ह 12,000 to 18,000 हे टेलर अँड फ्रान्सिस मध्ये 2019 ला आलं. त्याचबरोबर मॅडमने अनेक ग्रंथांचं संपादन केलंय, ज्याच्यामध्ये एकूण 10 पुस्तकं तरी मला म्हणजे शोधताना सापडलेली आहेत. त्यातील काही पुस्तकांची मी नावं घेतो इथं. रिसर्चिंग ट्रान्झिशन इन इंडियन हिस्ट्री रुटलेजचं आहे, 2018 मध्ये आलं आहे. त्याचबरोबर नरेटिव्ह रूट्स अँड इंटरसेक्शन इन प्री मॉडर्न एशिया हे पुस्तक देखील 2019 ला आलं. इंडियन ओशन हिस्ट्रीज द मेनी वर्ल्ड्स ऑफ मायकल नायलॉर पियर्सन हे देखील 2019 ला प्रकाशित झालेलं पुस्तक आहे. आणि आता नुकतंच त्यांचं वेज अर्नर्स इन इंडिया 1500 ते 1900 हे रिजनल अप्रोचेस इन इंटरनॅशनल कॉन्टेक्स्ट हे पुस्तक सेज प्रकाशनाद्वारे या 2022 मध्ये नुकतंच प्रकाशित झाले आहे. त्याचबरोबर मॅडमनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून अनुदान प्राप्त असलेले 2 रिसर्च प्रोजेक्ट पूर्ण केलेले आहेत. त्याचबरोबर अनेक संपादित ग्रंथांमध्ये, नामवंत संशोधन पत्रिकांमध्ये, जर्नल्समध्ये मॅडमचे लेख आपल्याला प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्याचबरोबर प्रोफेसर राधिका शेषन यांनी अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये शोध निबंध सादर केलेले आहेत. तसेच अनेक विद्यापीठ कॉलेज येथे विशेष आमंत्रित म्हणून त्यांनी व्याख्याने दिलेली आहेत. व्यापार आणि राजकारण यांचा संबंध, सागरी व्यापार आणि किनारी प्रदेश, त्याचबरोबर अंतर्गत भाग यांचा या सागरी व्यापाराशी असलेला संबंध, परदेशी प्रवास वृत्तांत, युरोपियन प्रवास वृत्तांत, इतिहास आणि लिंगभाव, वसाहतपूर्व काळासंदर्भात जी काही संकल्पनात्मक मांडणी आहे हे मॅडमच्या विशेष अभ्यासाचे विषय आहेत. JNU सारख्या अत्यंत प्रतिष्ठित विद्यापीठातून त्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण करत असताना आणि अनेक वर्ष अध्यापन आणि संशोधन यांच्यामुळे प्रोफेसर राधिका शेषन यांचा प्रोफेसर रोमिला थापर यांच्याशी अनेक काळ जवळून संपर्क आला आहे. पुणे विद्यापीठात माझ्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रोफेसर रोमिला थापर हे नाव आणि त्यांच्या संदर्भातली विस्तृत माहिती ही पहिल्यांदा डॉक्टर राधिका शेषन यांच्याकडून ऐकलेली आहे आणि हा अनेक जणांचा अनुभव आहे. त्यामुळे कुतूहल शाळा आयोजित प्रोफेसर रोमिला थापर आणि प्रोफेसर इरफान हबीब यांच्या गौरवार्थ जी विशेष व्याख्यानमाला आम्ही आयोजित करत आहोत त्यातल्या पहिल्या व्याख्यानाकरता प्रोफेसर रोमिला थापर यांचे विविध विश्व या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी आम्ही प्रोफेसर राधिका शेषन मॅडम यांना विनंती केली आणि त्यांनी होकार दिल्याने व्याख्यान आम्ही आयोजित करू शकलो आहोत. कुतूहल शाळेच्या आयोजक सहअध्यायी यांच्यातर्फे मी प्राध्यापक डॉक्टर राधिका शेषन यांचे स्वागत करतो. मॅडमनी आपली मांडणी सुरू करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. प्राध्यापक डॉक्टर राधिका शेषन. थैंक यू मुफीद एंड थैंक यू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी. हमेशा की जैसे मैं इंग्लिश और हिंदी में ही बोलूंगी. बहुत सारे फेमिलियर नाम तो दिखते ही हैं इधर, तो फिर सबको तो मालूम है कि मेरा तो मिक्स्ड होता ही है, तो वैसे ही मैं बोलूंगी. भाई मुफीद ने कहा कि रोमिला थापर मैम के नाम उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ही सुना. उस तरह से मैं शुरू करूंगी मेरे खुद के अनुभव से. 1975 की बात है.
मैं फर्स्ट ईयर BA में थी, and I know that was before most of you were born. But anyway, in 1975, I joined first year BA. उस समय एक पब्लिक लेक्चर थी और हमारे टीचर्स ने कहा कि जाओ सुनो, बोले this is something that you will never have heard before, and if you are going to be history honors students, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे और history honors हमारा था, तो हमसे कहा था कि these are people, you will go and listen to this lecture because there are things that you will hear in this lecture that you have never heard in your lives before. तो हम लोग गए, good students, टीचर ने कहा तो हम लोग भी सुने और गए, और वहां 3 हिस्टोरियंस थे, एक रोमिला थापर, एक हरबंस मुखिया, एक बिपिन चंद्रा। और उस समय हमने पहली बार इनके नाम सुने, इनके लेक्चर्स सुने और बहुत सारे विषयों के बारे में पहली बार हमें मालूमात हुई। उस दिन की लेक्चर थी जो बाद में किताब बनी, कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हमें पहली बार इन सारे शब्दों की मालूमात हुई कि कम्युनलिज्म क्या होती है, हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी स्पेसिफिकली क्या होती है, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का जो असर पड़ा है इतिहास लेखन पर, उसके बारे में पहली बार हमें मालूम था। लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ, ये that I think was the first time we understood how much history plays a role in the creation of identity. So identity politics जो हम बोलते हैं, वो पहली बार हमें उस समय मालूम पड़ा कि कम्युनल आइडेंटिटी के साथ कौन कौन सी आइडेंटिटीज शुरू होती हैं। और अगर मैं प्रोफेसर रोमिला थापर की अनेक विश्व के बारे में बोलूं तो मैं शुरुआत उधर से करूंगी, क्योंकि एक विश्व की खासियत ये है कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी एंड द क्रिएशन ऑफ differences. So she used to say that history is about the study of the way in which the past has been constructed. शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, constructed. उसी समय हमने E.H. कार की भी एक कोटेशन सुनी, और वो भी रोमिला मैम से ही, कि E.H. कार ने उनकी व्हाट इज हिस्ट्री में कहा है कि facts are laid out like fish on a fishmonger's slab. The historian chooses his fish and identifies why it is important. Facts अपने आप नहीं आते हैं, इतिहासकार चुनते हैं। रोमिला मैम ने हमेशा हमसे कहा कि देखो क्यों चुन रहे हो, ये किसने क्या चुना, कैसे चुना, इसकी जानकारी। So that's the second part of her world, that you identify what facts, but you have to understand that ये जो facts तुमने चुना, ये सारे facts होते नहीं हैं, इतिहास कभी कंप्लीट होती नहीं है। उसी समय हमने रोमिला मैम की लेक्चर खत्म हुई तो मुखिया साहब की लेक्चर शुरू हुई, और उस समय पहली बार हमें मालूम पड़ा कि टोटल हिस्ट्री नाम की कुछ चीज बन रही है। नहीं थी, अनाल स्कूल की शुरुआत थी, इंडिया के अंदर तो अनाल्स की शुरुआत थी, तो हमने अनाल्स के नाम सुने, टोटल हिस्ट्री के नाम सुने। ये सारे जो चीजें थे, ये उनकी एक विश्व की एक भाग होती है। वापस गए, कॉलेज खत्म किया, और उसी समय हम लोगों ने डिसाइड, हम 3-4 लोग थे एक्चुअली, उससे ज्यादा, हम लोगों ने डिसाइड किया कि आगे जाके एमए तो करना ही है और जेएनयू में ही करना है। तो हमें इस लेवल की मार्क्स और इस लेवल की रीडिंग हमें अभी करनी है ताकि हमें जेएनयू में एडमिशन मिले। सो उधर से हमारी शुरुआत हुई। एंड sorry, I still have a bad throat, so 78 हो गई एडमिशन जेएनयू में।
लेक्चर्स, और उन दिनों में हर एक सेमेस्टर में एक कंपल्सरी कोर्स था। सीधी सी बात है, मैंने बहुत एंशिएंट इंडिया पढ़ाई, रोमिला मैम से सीखी ही एंशिएंट इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट से मुझसे एंशिएंट इंडिया पढ़े, लेकिन जिस समय मैं जेएनयू में गई, एंशिएंट इंडिया से मॉडर्न इंडिया सबसे बोरिंग मुझे लगता था, एंशिएंट इंडिया उससे जरा कम, और मिडिवल इंडिया में ही इंटरेस्ट है। तो एडमिशन मैंने ली मिडिवल इंडिया में, लेकिन वहां गए तो मालूम पड़ा कि हिस्ट्री पीरियडाइजेशन इस तरह की कॉन्क्रीट होती नहीं है, ओवरलैप्स बहुत होते हैं। तो हमारी पहली सेमेस्टर की कंपल्सरी कोर्स थी एंशिएंट सोसाइटीज, जहाँ पे क्लासिकल सिविलाइजेशंस के बारे में रोमिला मैम पढ़ाते थे। उस समय हमने पहली बार सीखा कि क्लासिकल सिविलाइजेशंस क्या होती हैं, इनको क्लासिकल क्यों बोलते हैं, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस की खासियत क्या है। लेकिन साथ में मैम ये भी बोलती थी कि इनको क्लासिकल बोलते हैं क्योंकि इस पर काम बहुत हुआ है, लेकिन ये मत भूलो कि अगर इनको क्लासिकल बोलते हैं तो उधर की वो क्लासिकल की शुरुआत होती है रेनेसांस से। अगर हम क्लासिकल सिविलाइजेशंस पढ़ रहे हैं तो हमें यूरोपियन हिस्ट्री की मालूमात होनी ही है। ये उनकी दूसरी विश है, कंपैरेटिव हिस्ट्री करना ही है। You cannot study history in isolation. You must study it from a comparative perspective. So the second dimension of the world that she opened up is a lot of things, and possibly that was the first time all of us had actually read books on Greek civilization, on Roman civilization. And मैम से अगर बात करते थे तो हमेशा मैम बोलती थी, that's not enough. Why aren't you reading something on Chinese civilization? Why aren't you reading something on Mesopotamia? साथ में किताबों के नाम भी आ जाते थे। और फिर बोलते थे, but remember you're Indian, so you must know about the Indian culture. So पूरी जहाँ दो किताबों के नाम बताते थे इजिप्ट और मेसोपोटामिया के बारे में, इंडिया में पूरी 2-3 पेजों की किताबों के नाम हमने लिखे, पढ़ी भी, पढ़ना ही था। एंड देन उसके बाद क्लास में पूछती थी, some of you came and asked for names of books. Have you found the books? कुछ किताबें मिलती थी, कुछ नहीं। तो उसके बाद बोलती थी, all right, this is a senior student. The student will take you to the library and take out the books, but you must read it. You must come back and discuss it in class. गए लाइब्रेरी, तो वो एक और विश्व था, मदद करो स्टूडेंट्स की, सीनियर स्टूडेंट्स को बोलो जूनियर स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करते हैं, और फिर बोलते थे कि जाओ लेके आओ। एंड एज ऑलवेज अभी स्टूडेंट की जिंदगी तो होती है कि कॉफी हाउस कैंटीन्स में बहुत टाइम बिताते थे। तो मैम ने एक बार, और हमारी एक पूरी ग्रुप थी, वो एक साल थी कि हमारी कॉलेज में, लेडी श्रीराम कॉलेज में थी, तो हम लोग 15 लोग की एडमिशन हो गई थी उस साल की एमए में। तो हम लोग 15 लड़कियों की तो एक झुंड बनती ही थी हमेशा। We were always together, all 15 of us. And ma'am, I think, named us the LSRians. So this, that group, either LSRians or that group, उस तरह से। And I will say that शुरू में किसी को लगता नहीं था कि हमने कुछ पढ़ाई की। साथ में थे, हम लोग साथ में बात करते थे, और बात तो बहुत करते थे। So मैम, जब हमारी पहली टर्म पेपर हमने सबमिट की, उस समय मैम ने क्लास में कहा, I never thought you girls were serious, but it appears that some of you are serious. So for those who are serious, here is more work to be done. ऐसा नहीं कि एक टर्म पेपर अच्छा किया तो काम खत्म, आगे बढ़ो और थोड़ा करो। बाद में मैम की लेक्चर्स तो मैंने नहीं, क्लासेस कोर्सेज तो मैंने नहीं की, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट तो ज्यादा मतलब एज अ फुल टाइम कोर्स हमने मैम की कम ही की थी। लेकिन मैम के लेक्चर्स तो हम अटेंड करते ही थे, क्योंकि
when ma'am spoke about religion and society in early India, we attended her classes. When she talked about gender in early India, we attended her classes. So a lot of the areas that she has continued to write on, that she has continued to focus on, we used to attend those lectures because we had friends in the Ancient India department who would tell us, okay, tomorrow ma'am is going to be talking about this topic. And those would always be in the bigger classroom. तो जाओ सुनो. इस तरह से बहुत सारे लेक्चर्स मैम की सुने. और उनकी एक खासियत होती है कि क्लास में आती थी वो कार्ड्स लेके और शुरू करती थी. और एक टाइम आई थिंक क्लास में हमने कार्ड्स देखे, हर एक कार्ड में एक सेंटेंस लिखा रहता था. ऐसा नहीं कि बहुत सारे, एक सेंटेंस लिखा रहता था और उस सेंटेंस के आधार पर मैम आधा घंटा, पौना घंटा, कभी कभी 2 घंटे फुल बोलती थी. और उनकी लेक्चर्स इतने, and she could keep an audience of, we were 45 in the class. 2 घंटे की लेक्चर कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, किसी की हिलने की भी आवाज नहीं आती थी. बस कागज कलम, जो भी Sorry. I actually still have those notes that I took down. And you people, those of you who've attended my classes on Ancient India, you've had the benefit of that because I've used those notes to teach you people. That is also the lineage. It was also the time when she was talking about lineage societies. The book that came out later, From Lineage to State, we heard some of it in those years. We heard about Dana and Dakshina. We talked about, we learned about commodity exchange. We learned about the early state. We learned about a money economy. We learned about, and this was much later, we learned about networks of knowledge. These are also the things that man has consistently been talking about. What are the networks? How does knowledge spread? Where do you find connections? Connections वहां होती हैं जहां तुम ढूंढो. ऐसा नहीं कि connections अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे हाथ में, लेकिन पढ़ो, देखो क्या क्या होता है. Then you will be able to look at the connections. She was also the first to tell us that in the history of the world, there were time frames when in many parts of the world, there was a sudden flowering of knowledge. She used to talk to us, for instance, about the period of Plato, the 6th century in Greece, and the 6th century BCE in India. In those days, of course, we used to say AD and not BCE, but anyway, BC and not BCE. But she used to talk about the importance and would always tell us, look for other connections of this kind and look for the reasons. The reasons that you find will not be the same as the reasons that I find. It does not mean that your reasons are wrong and mine are right, or that mine are wrong and yours are right. It just means that there are perspectives. इतिहास बनती है perspective से और interpretation से. लेकिन interpretation तब होती है जब तुम्हारी sources पर पकड़ है. और ये हमेशा उनकी एक खासियत होती है कि sources उस समय की जितनी sources होती हैं, जितनी मिलती हैं, उन सबको पढ़ो. History is impossible without sources. Sources are multiple. You must know at least something about as many sources as possible for the period that you are talking about. Nobody can know everything about the sources. Ma'am, of course, has come close to it. But
nobody can know everything. That does not mean you don't make the effort. And again, डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स की अक्सर होती थी ये रानडे मैडम से बोला इट्स नाय भीति वाटते हम लोगों का वो आदत, हम लोगों को डेफिनेटली वो आइडिया थी मैम के बारे में, रोमिला मैम के बारे में। डर लगता था कि मैम अभी आगे क्या बोलेगी, क्या पूछेगी और कहाँ हमें, कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैम की कोई एक सेंटेंस होगी क्लास में जिसमें पूरी डिस्कशन अलग तरीके से जाती है। I don't think we ever came out of a lecture of hers without having learned something different. And that, I will say, is the speciality even today. Until today. Today, there are, if you listen to her lecture, then there is something to take away from it, definitely. You cannot हमेशा कुछ एक नई ओपिनियन, एक नई दिशा, एक नई विचारधारा के बारे में मालूमात तो मिलती ही है अभी भी। So if we talk about the worlds of Romila Thapar, then the worlds are first exploration. Think about the multiplicity of history. The second is democracy. That history is about understanding the past in the context of the present, but it is also about debating the past. The past is not monolithic. The present is even less monolithic. But we have always had the culture of contact, the culture of collaboration, the cultures of contact, the cultures of collaboration. There have been times when there have been confrontations. What were the reasons for the confrontations? How do you understand confrontation? अगर इतिहास में कॉन्फ्रंट किया, इतिहास में रिकॉर्ड मिलती है कॉन्फ्रंटेशंस की, समझो बेसिस क्या है कॉन्फ्रंटेशंस की। कॉन्फ्रंटेशन का ये मतलब नहीं है कि हमेशा कोई राइट होता है, वर्चस्व होती है। किसको दबाया गया है, कैसे दबाया गया है, दबाव के तरीके कौन कौन सी होती हैं, ये समझो। लेकिन ये भी समझो कि भारत के इतिहास की एक और भाग होती है कि हमेशा डिबेट हुआ करता है। At democracy, and here is where she used to move from the ancient past to the more recent past and to contemporary times, where she said democracy is sustained by debate. Debate does not mean argument. Debate means informed debate. अगर तुम बोलो कि ये गलत है तो ठीक है, माना कि गलत है, लेकिन क्यों गलत है, कारण तो दो। You cannot dismiss anything, but you must objectively understand. You must critique, not criticize, and only then will you be able to come up with a constructive criticism. सिर्फ आक्षेप डालना is not enough. अगर तुम्हें लगता है कि कुछ चीज गलत है तो फिर चर्चा करो, बताओ क्यों गलत है। लेकिन ऐसा नहीं कि तमिल की प्रवर्ब होती है कि मेरे हाथ में जो खरगोश आई उसकी 3 सींग होते हैं, एक या 2 नहीं, 3 सींग होते हैं। खरगोश की सींग हो सकती है क्या? या फिर दूसरा कि मेरे सर के ऊपर जो गया है वो कौवा सफेद था। अगर इस तरह की हम पकड़ के रखे तो ये आर्ग्यूमेंट होता है, ये कॉन्फ्रंटेशन होती है।
इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मुझे बताना है कि ये सही है, तो फिर ये भी मुझे बोलना है कि मेरी राय में ये सही क्यों है। मेरे पास कौन सी साधने हैं जिसके माध्यम से मैं बता सकती हूँ कुछ सही है कि नहीं। लेकिन ये हमेशा मानना है कि मैं जो सही बोलती हूँ वो मेरी इंटरप्रिटेशन पर है। ऐसा नहीं कि जो मैं सही बोलती हूँ वो हमेशा के लिए सही होती है। Man would not say it, but others have said that there is only one truth. And that one truth is that there is no single truth. Truth जो होती है इतिहास में, ये ऐतिहासिक सच होता है। ऐतिहासिक सच, और ये भी हमने पहली बार मैम से ही सीखी। हिस्टोरिकल ट्रूथ। ऐतिहासिक सच इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि इतिहास खत्म हो गई है, समय खत्म हो गया है, हम वापस उस समय में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन उस समय में हम रिकंस्ट्रक्ट करते थे। Ma'am used to quote Collingwood to us to tell us that there is something called a historical imagination. But she would also say that needs to be anchored in sources. And the one major dimension of the world, and here I come to the singular, is that of sources. History does not exist without sources. What are your sources? Sources are textual, yes. But the textual source is one part of it. Literary sources होते हैं, लेकिन साथ में दूसरे भी तो होते हैं। दूसरे अलग तरीके की भी साधनें होती हैं। और ये मेरा टोटल पर्सनल है। मैं तो बोलूंगी कि मैम की सबसे the book that of ma'am's that I have most liked has been शकुंतला। इसमें उन्होंने दिखाया कि एक कहानी को बार बार दोहराने से कहानी की खासियत तो मिलती ही है, लेकिन जिस समय में वो कहानी कही गई दोबारा, उस समय की सामाजिक दृष्टिकोण हमें कहानी से मिलती है। That the retelling of a story tells us about the time in which it was retold. So the story of Shakuntala gives us 3, 4, 5 social contexts, historical contexts. The time that it was written earlier. So the first time that you get it is in the Mahabharata. What kind of context is there in the Mahabharata? Then we get the time of Kalidas. When Shakuntala moves away from being a story of matriarchal power to the understanding of patriarchy and court culture. निकल गए हम एक सिचुएशन से, we go into an entire court context. दरबारी समाज के अंदर जाते हैं, उसमें ये भी आ जाता है कि उच्च वर्णी आ जाती है, तो वर्ण की संस्कार आ जाते हैं कालिदास में। तो कालिदास को समझो गुप्त काल की ब्राह्मणिज्म के अंदर। You can't just understand it in terms of Kalidas as the great Sanskrit writer, but Kalidas as the great Sanskrit writer of the era of the Guptas. Then she talked of the ब्रज भाषा की शकुंतला, और बोले अगर तुम कंपेयर करो ब्रज भाषा की शकुंतला और कालिदास की शकुंतला, अगर तुम कंपेयर करो तो नाम वही होते हैं, लेकिन कहानी पूरी अलग हो जाती है। और उसके बाद आखिर में किताब में भी उन्होंने फिल्म पर लिखा कि if we are talking about the film, then remember the film has been made in the context of India's national movement. तो फिल्म में कहाँ तुम्हें नेशनलिज्म दिखती है? तो देश और देशभक्ति की संकल्पनाएं महाभारत में नहीं है, लेकिन फिल्म में आ जाती है। So she says the story of a story gives you multiple contexts. These she called narratives. शुरुआत तो उन्होंने
इस किताब की शुरुआत डीडी कोसाम्बी लेक्चर से शुरू की गई और 2 लेक्चर्स उन्होंने दिया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डीडी कोसाम्बी लेक्चर्स की सीरीज में, और दोनों भी किताबें बनी. The one was Shakuntala, the other one was Somnath, many narratives of the temple. So she talked therefore of narratives and the making of history. इतिहास साधनों पे बनती है, लेकिन इतिहास की साधन पत्थर की लकीरें नहीं होती है. हर एक समय साधन या एक कहानी को लेके अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं. So history is also the story of the past. How has the story been told? How many times has the story been retold? You cannot have history without understanding the retelling of history. And we therefore move from history to history as records of the past, the multiple tellings of the past. Every history is accurate. Every history is incomplete. Every history can be contested. Every history can be understood. Every history must be debated in order to build a better understanding of the past, the present. इतिहास आज की होती है. इतिहास academically is rooted in today, not in the past. आज की चश्मा को लेके हम पीछे देखते हैं, और अगर वो पीछे देख रहे हैं तो हमें याद रखना है कि चश्मा हमारी आज की होती है, और आज की चश्मा से हमारी क्या नजरिया बनती है. These are some of her words. We all know the range of her writings, but these are some of the words that Professor Romila has brought forward to successive generations of students, teachers of history, students of history, and to the public as a whole. और मैम की एक और खासियत होती है कि हमेशा वो एकदम सीधी सी भाषा में बोलती है. जो हमें बोलते थे कि जार्गनिस्टिक लैंग्वेज, सो जार्गन यूज नहीं करती है, सीधी भाषा है, लोगों तक पहुंचने की आसान तरीका होती है. And let me end on a very personal note. एमफिल की एक चैप्टर की डिस्कशन जब कर रहे थे, मेरा तो एमफिल मद्रास सिटी पर था, और उस समय बर्टनस्टाइन के बारे में बहुत चर्चा चल रही थी, सेगमेंटरी स्टेट कॉन्सेप्ट. तो मैम ने पूछा कि you're talking about the South, and I know you're not going to be talking about the models of the state, but what do you think of models of the state? So at that time I told her, ma'am, I'm very sorry to say this, but I think models are more confusing than real because they give you so much theory and not enough facts. She says, remember that a model is to be tested. It is not to be applied. When you look at your research, use the model, but test the model. Do not apply the model. That is the last of her words. You must always question. You must always test. Only then will you understand. Okay, I'm going to stop over there. Sorry about the coughing. I am still recovering from my bout of COVID, so it's still not very comfortable. Anyway, I'll stop over there and we'll go into question answers. थँक्यू मॅम. यानंतर आपण काही प्रश्न घेणार आहोत. ज्यांना प्रश्न विचारायचे असतील त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये टाका, किंवा तुम्ही हँड रेज जरी केला तरी चालेल. मग इकडनं तुम्हाला अनम्यूट केलं जाईल आणि मग तुम्ही विचारा. I think my video went off for a bit.
थोड़ा मैं वीडियो बंद करूंगी, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वीडियो थोड़ा टाइम कैमरा बंद करूंगी। जब सवाल आते हैं फिर से वीडियो कैमरा चालू करके मैं जवाब दूंगी। ओके मैम। हाँ, हाँ मनोज, Hello. मनोज पवार। Ma'am, Yes. I am associate professor at Nashik College, Mhm. and I am teaching Mhm. the same paper that you taught in university, that is ideas and institution in medieval period. But I am very confused about one concept that is put forth by Romila ji, that is lineage society, because it is very difficult even to the professors of history, because we have been told about the tribal society in ancient period, and so I think this is a new concept that she introduced, lineage society and lineage state. And so it is very difficult us to teach the student what which topic, which connotation to be taught to the student, whether we should call it as a tribal society or lineage society, because very recently that part of that concept been introduced in the syllabus of the university. See, I will go to what Romila ma'am said about society. That when she was discussing lineage societies with us, then at that time she used to tell us that tribal is actually a very new word, because the idea of tribal is something that came up much more in colonial contexts. ये tribes, ये जो शब्द होती है, ये tribes की शब्द colonialism से ज्यादा बना है। यूरोप जब when Europe expanded, then they went into parts of the world which they talked of as being less civilized. Roman civilizations के किताब जो है Germanic, Tacitus की किताब History of the Germanic Peoples, उसकी मॉडिफिकेशन होके 19th सेंचुरी में आने लगती है शब्द ट्राइब्स। तो मैम ने हमेशा हमसे कहा कि ट्राइबल सोसाइटी जो होती है, ये ट्राइबल सोसाइटी एक सोसाइटी होती नहीं है, ट्राइबल सोसाइटीज होती है। तो कौन सी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो? बोल सकते हो क्या कि फॉर एग्जाम्पल संथाल ट्राइब्स जो होते हैं, उनकी पूरी कल्चर्स वैसे ही exactly the same as say the काटकरी समाज in महाराष्ट्र। माना कि दोनों भी जंगल के हैं, काटकरी होती हैं और संथाल भी होती हैं, लेकिन एक होते हैं क्या? नहीं होते हैं। और ट्राइब्स की जो संकल्पना है वो ऐतिहासिक तौर से 19th सेंचुरी से ही शुरू होती है। इंडिया में तो it is the British who brought in the Criminal Tribes Act. Because we didn't talk about tribes, it is colonial context. That is why she says it is better to talk of a lineage society. Lineage society अलग अलग दिशाओं में जाती है। Lineage की शुरुआत होती है उस समय में जब तुम्हारी कुल वंश कुल परंपरा शुरू होती है। ट्राइबल सोसाइटी अगर हम बोलते हैं तो हमारी वो वंश कुल परंपरा की संकल्पना क्लियर नहीं होती है। Lineage in that sense is applicable to any social level. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेवल की सोसाइटी। ट्राइबल अगर बोलते हैं तो फिर वन के लोग, and today at any rate tribes is invariably understood in the context of the scheduled tribes, DT&T,
इस तरह की संकल्पना इमीडिएटली आ जाती है ट्राइब्स अगर बोलते हैं. So she said lineage is a more comprehensive word because lineage applies to any kind of level in society, not necessarily only to one level. The lineage is something which is a family या एक लाइन एज, जैसे आपने कहा अभी लाइन एज, एक लाइन होती है, एक धागा होती है. शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? शुरुआत होती है एक एंसेस्टर से, जहां से अपनी वंश शुरू होती है. ये होती है लाइन. ब्राह्मणों के लिए अक्सर ये लाइन बन जाती थी सप्तऋषि से. फिर उसके बाद क्षत्रिय की कुल आती है, वंश शुरू होती है चंद्रवंशीय, सूर्यवंशीय, चंद्र और सूरज से, क्योंकि उन्हें दिखाना था कि हमारी जो शुरुआत होती है ये इतनी ऊंची होती है. सो बोलते थे कि लीनिएज गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्रिविलेज, कि हम यहां से शुरू होते हैं. ये सब all of these become ways of constructing a past and of constructing a history for yourself. ये तो हमें मानना नहीं है कि ये सच है, लेकिन इससे एक समाज के एक स्तर बनाने की तरीका होते हैं. A line gives you a starting point, but it does not necessarily give you an ending point, because a line can be stretched extensively. In social terms, a lineage also gives you two different contexts. That is, a lineage can give you a time when you had many parallel lines, all of which were equally important. And then, how does this line transform? अगर vertical lines हैं, तो फिर vertical lines तुम्हारी बहुत सारे होते हैं और उनमें कोई फर्क नहीं होता है. ये तुम्हारी vertical line जब horizontal बनती है तब ऊंच नीच आ जाता है. तो समाज में कैसे ये vertical lines बदल जाती हैं into horizontal lines? क्यों बदलती हैं, कैसे बदलती हैं, और तुम्हारी ऊंच नीच की संकल्पना ये वर्टिकल से शुरू होती है और आगे पहुंचती है ऊंच नीच में. शुरुआत में होती है कि सारे एक खानदान के होते हैं, लेकिन ऋग्वेद में मैडम ने ही कहा है कि ऋग्वेद में आ जाता है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चरल सेटल्ड लाइफ बनती है, तो जो जमीन पर काम करते हैं, ऋग्वेद में एक भाग होते हैं जब बोलते हैं कि राजन्य जो होते हैं वो विषामत्त होते हैं. विष जो होते थे वो लोग थे जो जमीन पर काम करते थे, और राजन्य होते हैं इनको पॉइजन खिलाने वाले, इनको खाने वाले. Here you get the first indication of the establishment of social stratification as ऊंच नीच, कि खानदान के अंदर के ही लोगों को बोला जाता है कि ये विषामत्त है. और ये खानदान क्या है? शुरुआत की एग्रीकल्चर begins only within the family. It is the Gahapati who does it. So a lineage society or a lineage society is one which identifies, in very simple terms, which identifies its starting point from a single ancestor who could be a real historical person or could be a mythical person, but who then becomes the starting point, और उसके बाद एक खानदान की एक इतिहास बनने लगती है. इस खानदान की इतिहास आगे जाके समाज में किस तरह से समाज जाता है, ये आपको इतिहास पुराण में भी आ जाता है. पुराणों में आ जाता है तो तुम्हारी जीनियोलॉजीज आ जाते हैं. माना कि जीनियोलॉजीज अक्सर आडंबरिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, लेकिन फिर भी
इनमें क्या बोला जाता है, ये हमारे एक स्थान है. So lineage finally is a way of understanding and explaining certain developments in society and certain ways of explaining stratification in society. I hope that helps, Manoj. Thank you, In madam. chat box, ma'am, in chat box we have one question from Priyanka Joshi More. She is asking, today, why do new historians and histories are kind of anti-Romila Thapar? I see nothing wrong with her understanding of history and historiography. So why Indian historians? And she is also mentioning, sorry, I don't want to hurt your throat. That's okay, Priyanka. Okay. Many of them are anti-Romila Thapar because ma'am has been very clearly a proponent of the Marxist methodology. And today, the Marxist methodology and the left historians as a whole have been seen as denying the glory of India's past. So it is very clearly, it is politically motivated. Ma'am has been left-oriented. That's okay, she has been. I personally don't see any problem with that. There have always been problems with the kinds of things that she's written, because it has always been said that she does not know Sanskrit. She bases her arguments on the writings, on the translations of the colonial historians. And so, like all colonial historians, most of the left historians have not studied the sources or understood the sources in the original language. These are the major reasons why they are anti-Romila Thapar. I think the easiest way is to quote what one of my friends said, that if Romila ma'am had not done so much work, then the anti-Romila lobby would not have been so strong. मैम ने इतना लिखा है कि उनकी टालते बाकी सब ने बहुत कुछ लिखा है. लेकिन I personally think that what they have, and this is entirely personal, I do not think that those who question what she has written question with the same authority with which she has written. She has such a range and such a hold on the sources and such a remarkable array of historical constructions that have been made that I personally don't think that what she has written that can be challenged. And I agree with you, Priyanka. I don't see anything wrong with her understanding of history and historiography. But political agendas which insist that the left is wrong, I'm not saying that the left is correct. I will say that in many cases, the left opinion has been problematic. And in one area in particular, the left opinion has been only recently modified, which is the issue of caste. The left has tended to look at class over caste. And in the Indian context, one needs to understand caste and the connotations of caste. So in that, yes, left historians, many left historians have been rather problematic in their approach. I'm going to give you the name of somebody who's really looked at it. Look for the writings of Shankar Goyal. He's done a historiography. His book has just come out. It's called The Classical Age in India Reconsidered. He's also got something on Harsha. In both, he's got something on historiography of early India. And in that, he has done this very, very detailed analysis of the different kinds of writings that have come out from the left, the right, and those who belong neither to the left nor to the right. Look at those writings. Those would be of help. Okay. Then
जेंडर हिस्ट्रीवर पुस्तक ना. Okay, fine. Archana Mufid has given you that. Thank you. We have next question was Shashwat Bhattacharya. Shashwat, yeah. Okay, movements of subalterns, especially tribals, are explained. Okay, let me take these in reverse order. Can tribal movements be considered as peasant movements in certain areas? Yes, definitely. For example, the Telangana movement, which was very much a peasant movement, which was also a left-led movement, which was also a tribal-led movement, definitely. Go back to the Deccan riots, and again, yes, look at the kinds of assertions that are being made by Birsa Munda and Jitu Sankhar. These overlap peasant and tribal. So yes, tribal movements can be considered as peasant movements. I think over here, I would also recommend that you look at the writings of Theodore Shannon and W.W. Rostow. Okay, let me put the names in the chat box. And in the Indian context, don't forget the writings of D.N. Thanagre. These would give you an understanding of what kinds of crossovers there are between tribal and peasant movements. In many of the colonized countries, there is quite a bit of a crossover. Tribal systems were also part of the peasant economy, but there is a mixed economy among the tribal areas, which is geared towards both pastoralism and agriculture, or towards hunting, gathering, and agriculture. The British classified the Jhum cultivators as shifting nomadic tribal agriculture. So when we're looking at the Indian context, it is not very easy to separate a tribal movement from a peasant movement. There is a crossover. So yes, in India, to answer your last question, yes, tribal movements can be considered also as peasant movements. Okay, then middle class intelligentsia-led movements. Yes, the actual voices of the tribals are often subdued, are often in fact lost altogether. I think it is perhaps we need to go back to the kind of work that was initiated but not really followed up by David Hardiman, where he talked of the coming of the Devi, and look at the ways in which subaltern movements pick up certain, let us say, have a certain vocabulary of protest, which needs to be understood much more concretely. The early subaltern volumes did that. And here I'll go with Sumit Sarkar to say that the later subaltern volumes have gone more into discussing context of the state and historiography rather than actual subaltern. Yes, it can be applied in the case of women. It can be seen in, well, let us take the example, first of all, of the subaltern studies volumes themselves. Your first volume devoted to Dalit movements has been volume 13. To the Dalit histories is volume 14, volume 13. And gender came in volume 12. These are definitely still areas that need to be better understood, better researched, and definitely needs to be more clearly understood and contextualized.
आपण एक शेवटचा प्रश्न घेऊया आणि थांबूया. मॅमला बोलायला थोडा त्रास होतोय. शेवटचा प्रश्न असेल तर तो घेऊ आणि थांबू. प्रियांकाच्या प्रश्नाचं उत्तर दिले का ते टेक्स्ट? हा, दिलंय देऊन जा. हा, कृष्णा अनम्यूट कर स्वतःला आणि विचार. Good afternoon, ma'am. This is the second occasion I am listening to you, and I am in awe of you. Not just because of the content, but your very sweet voice. It makes one listen to it continuously. I wish our generation was blessed with such qualities. Ma'am, I had a sort of an observation type of a question and other proper question. While reading about while reading Romila ma'am's books, I came across this very interesting concept put by her, that of embedded histories. And this was in a reaction to the colonial and orientalist narrative that Indians have lacked histories. So Thapar ma'am had pointed, obviously, as you may know, that we will have to find histories which are embedded in our Indian literature. How do you look at it? And the second question comes out of my passion for our discipline. And I have noticed that many historians, including Romila Thapar ma'am and the ones in our city in Mumbai, have been lamenting that those involved in history research in the present times are sort of denigrating the importance of sources and are more inclined towards theorizing and writing in such a verbose that it means the discipline of history, it seems like it's losing sheen. Even I remember Romila ma'am in one of her lectures had jokingly said that she was dubbed by her colleagues, those in the Marxist fraternity itself, as a fanatic empirical positivist. And that somehow we are seeing that it is losing away. How do you look at it? Sorry, my questions are too large. No. That's okay. Yeah. I'm glad you asked them. Okay. Let me first get into embedded histories. So embedded histories are those which cannot be seen in terms of the Rankian tradition. Okay, let's give you an example from. I'll give it from my own research. It's easier for me to handle that. So we have, as part of the collections, the Indological Orientalist collections, we have an entire collection of records of South India's history, which are put together, which were collected by the administrator Colin Mackenzie. These are called the Mackenzie manuscript. There's a whole range of them. He collected them in different languages. And the Mackenzie manuscripts have got all kinds of family histories. The introduction that Mackenzie wrote said that these are all narratives that claim an importance in order to gain benefits from the British rule, but many of them do not have the substance to be able to validate their claims. That's where we have to start our understanding of embedded history, because colonialism negated all these claims to say that these are just claims. They're looking for handouts from the British. They have nothing substantial to them. But if we look at them, what are they claiming? For instance, there's one particular one, which is called the History of the Shivaganga Zamindari. Now, if one looks at the original Tamil, then they don't use the word Zamindari at all. It's the British who added the word Zamindari. They call themselves the Shivaganga rulers. And they claim their descent from the Cholas. Fine. Everybody over there claims descent from the Cholas because they're looking at a particular legitimacy that is claimed from the Cholas. But the Shivaganga Zamindari goes on to identify specifics. It identifies the boundaries. It says this is where the Shivaganga family had control. It gives you
and it gives you, if you really look at it, it gives you location, it gives you revenue status, it gives you position in society, and it gives you, at another level, a claim to a certain superior status over others. It does not deny the others, but it claims to be more important than the others. These are embedded histories. These are locality-based histories which give you the, the ways in which one locates oneself in a time and in a space, and then uses that location in time and space in order to create a structure of authority, of superiority, and of control. And the genealogy submitted to the colonial rulers was a way of claiming the continuity of the same status. That's one of the ways of looking at embedded histories. Let's take you into a totally different area. Kalidas, Malavika Agnimitra. Okay, you've got Malavika and you've got Agnimitra. Forget the love story. What you have here, the context of two regions, the conflict between two regions, the attempts at overcoming or maintaining the conflict, the ways in which the society in the two countries are defined, and the ways in which, fine, it is nice flight of imagination, the swan coming in and giving the information. But there is an exchange, there is the reality of the exchange of information. And that exchange of information happens at both the family level and at the social level. Who is it who takes Malavika's information to Agnimitra and vice versa? People from her family. You have the bardic literature, you've got that connection. So go away from the love story and look at the layers of society that the Malavika Agnimitra talks about. And you get a history, an embedded history, which is rooted within a romantic love story, but which has a history. And yes, I think that those of us who belong to the generation just after Romila ma'am and I guess my generation of historians, we believed that literature was fine as a source for history, but literature was not history. If we went into, let's see, Surendra Rao, among others, he said, the best thing that, he passed away some years ago, and he was another of those who was criticized as a positivist and a racist. He was one of those who said that the best thing for history has been the linguistic turn in history. The worst thing in history has been the linguistic turn in history. Because the linguistic turn in history allowed us to look at literary criticism, but it took us away from history into only linguistic analysis and cultural analysis. So theorization without the anchoring. I have said this in class a lot of times. Think of ideas as a series of helium-filled balloons. But we need the empirical details to pull those helium-filled balloons down to the ground and to be able to anchor them. I personally think that one cannot understand history without a detailed and close examination of the sources. I will accept that there can be multiple kinds of sources, but you have to identify the sources and you have to study those sources, because without those sources, it is not history. It is merely theories floating up there. So yes, I think it is a problem that we have gone into, well, we've got to a stage where unfortunately there seems to be no difference between history and culture studies, and there has to be a difference.
I am, in that sense, a disciplinary purist. And I think we have to remain true to the core of our discipline, which is of the sources and the analysis. But I will not say that sources are only written sources. Sources are visual, they are written, they are text, let's say, they are textual, they are inscriptional, they are literary, they are visual, they are architecture. There is so much that one can learn about science and technology from the architecture. These are our sources. So we have a lot of sources, but we need to anchor ourselves in our sources and understand them thoroughly. थँक्यू मॅम. आपण आता इथे थांबणार आहोत. बराच वेळ मॅमने आपल्याशी चर्चा केली आहे आणि त्या आजारी आहे, त्यांना आपल्याला दिसतच आहे, त्याच्यामुळे आपण इथे थांबूयात. पण आपण पुन्हा ज्यावेळेस आपल्याला वाटेल तेव्हा मॅमशी संवाद साधू आणि त्यांना पुन्हा निमंत्रित करू, कारण की आपण वर्षभर ही सिरीज चालवणार आहोत. आजच्या आपल्या या व्याख्यानाला मॅम वेळात वेळ काढून आणि त्या आजारी असतानाही उपस्थित झाल्यात आणि आपल्याला चांगलं प्रबुद्ध करणारं त्यांनी व्याख्यान दिलं, त्याबद्दल कुतूहल शाळेच्या वतीने आम्ही मॅमचे आभार मानतो. आणि आपण सगळेजण इथे सहभागी झाला त्याबद्दल आपलेही आभार. हे कार्यक्रम संपला असं म्हणण्यापूर्वी फक्त एक सूचना सगळ्यांना द्यायची आहे की आपल्याला जर कुतूहल शाळेच्या पुढच्या कार्यक्रमांसोबत जोडून घ्यायचं असेल तर आपल्यापर्यंत जे कुतूहल शाळेचं पोस्टर किंवा लिंक आली असेल तर त्याच्यामध्ये आमचे संपर्क आहेत, आमचा ईमेल ID आहे, आमच्याशी संपर्क साधा. नुसता संपर्क साधू नका, तर तुम्हाला जर वाटत असेल की कुतूहल शाळेने अजून काय केलं पाहिजे तर त्याही तुम्ही सूचना आम्हाला देऊ शकतात. आम्ही त्याच्यावर विचार करून आणि पुन्हा काही कार्यक्रम तसे आखता येऊ शकतात. कारण कुतूहल शाळेचा हेतू ही इतिहास शिक्षण आणि इतिहासाची लोकसाक्षरता करणं हा आहे. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणात आपण कुतूहल शाळेशी सहभागी व्हा, कुतूहल शाळेला सूचना द्या आणि कुतूहल शाळेचा प्रचार प्रसार करा. आजचा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो. धन्यवाद.